Good morning, Naveen. Very good morning to Naveen. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। Good morning, Naveen. Good morning to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ କିଟୋନ୍ ରିଭିଜନ୍ ଯଦି କରିବା RCHO ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ RCORDS କିଟୋନ୍ and suffix होची al prefix होची formyl for aldehyde ketone ପାଇଁ ONE prefix होची oxo then by means of oxidation primary alcohol give rise to aldehyde secondary alcohol give rise to ketone further primary alcohol on copper on dehydrogenation will produce aldehyde and secondary alcohol on dehydrogenation will produce ketone dry distillation of calcium salt will also produce aldehyde or ketone. Further, on Rosenthal reduction reaction, we can get the aldehyde. Dialkyl cadmium react with acid chloride to produce ketone. Alkyne under hydrolysis in presence of HgSO4 and H2SO4 will produce aldehyde or ketone. Alkene under ozonolysis will produce aldehyde or ketone. Further, upon reacting with Grignard's reagent, reacting Grignard's reagent with hydrogen cyanide or methyl nitrile, we will get aldehyde, or iron and cyanides, we will get ketone. In Itard's reaction, toluene give rise to benzaldehyde in presence of chromyl chloride and CCl4, and benzene plus CO plus HCl in presence of AlCl3 CCl4 will produce benzaldehyde. Then benzene plus benzyl plus acid chloride will produce benzoyl ketone or phenyl ketone. Only formaldehyde is gas at room temperature, whereas others are liquid and solid accordingly. Lower aldehydes are more soluble in water, higher aldehydes or ketones are less soluble in water due to formation of hydrogen bond in lower aldehyde ketone. Boiling point of alcohol is more than boiling point of ketone is more than boiling point of aldehyde is more than boiling point of alkane. Upon reacting with HCN, it will produce corresponding cyanohydrin. Further, on reacting with sodium bisulfite, it will produce sodium bisulfite. Then, when it reacts with Grignard's reagent, it produces alcohol. Upon reacting with hydroxylamine, it produces oxime. Upon reacting with hydrogen, it produces hydrazone. Phenyl hydrogen, it produces phenyl hydrazone. Semicarbazide, it will produce semicarbazone. And 2,4-DNPH, it will produce 2,4-dinitrophenyl hydrazone. And for aldol condensation, the condition for aldol condensation is it must contain an alpha hydrogen, and this alpha hydrogen is highly acidic, so it will on treatment with dilute or aqueous NaOH, it will produce the beta hydroxyaldehyde. This is the mechanism of aldol condensation. That is, at first the H plus is removed, and the next step the carbanion generated attached with the acetaldehyde to form a O minus, which on further
acid hydrolysis will produce the beta hydroxyaldehyde. Canninger reaction, it is the reverse of aldol condensation. That means the aldehyde having no alpha hydrogen will undergo Canninger reaction. In this reaction, formaldehyde react with concentrated NaOH, that is a strong base, concentrated base, to produce methanol and sodium formate. In the first step, the OH minus will attack at the carbonyl carbon of the formaldehyde, and in the next step the hydride is transformed, and in the next step the H plus is transformed to produce SCONA and methanol. Then PCl5, upon reacting with PCl5, it will produce dichloroalkane. Upon reacting with ammonia, formaldehyde will produce urotropine. Then upon reacting with ammonia, aldehyde will produce aldimine, and acetone will produce acetone amine. Then under catalytic reduction, it will produce primary alcohol or secondary alcohol. Further, in presence of LiLH4, that is lithium aluminum hydrate, it will produce the alcohol zinc mercury amalgam. In presence of concentrated HCl, aldehyde will give rise to alkane. This is the Clemmensen reduction reaction. In Wolff-Kishner reduction reaction, it will aldehyde react with hydrogen to produce hydrogen, which on treatment with KOH and glycol, it will produce corresponding alkane with elimination of nitrogen gas. Iodoform reaction, for iodoform reaction, the CH3CO group must be present in the compound. So in this reaction, it react with 3I2 in presence of NaOH to produce triiodoacetone. Further, this triiodoacetone, when treated with NaOH, will produce the yellow substance known as iodoform with elimination of sodium acetate. And this was the mechanism. Next, iodoform reaction, it was given to you. What is the products in this reaction? तो এই केस रे प्रोडक्ट सब कोन आसीबो? What is the products in this reactions? ए रिएक्शन गुडा करे प्रोडक्ट कोन आसीबो? फर्स्ट केस रे हमर रहिछि ब्यूटेन 2-ene, प्रोडक्ट कोन आसीबो पिलाने? नवीन यार प्रोडक्ट कोन आसीबो? This is your butane 2-ene. This is pentane 2-ene. This is hexane 2-ene. And this is ethanol. प्रथम केस रे प्रोडक्ट कोन आसीबो? तो मु लिखि दोछि प्रथम केस रे प्रोडक्ट आसीबो CHI3 आयोडोफॉर्म,
which is a white precipitate. आयोडो फॉर्म तो आसीबो आउ कोन आसीबो प्रोडक्ट प्लस C2H5COONA C2H5COONA केमती हला ना बिकॉज हम जो देखिबा इठी तुमरो नेक्स्ट स्टेप रे इठी जदी फॉर्म होइथांदा दैट CI3CO C2H5 फॉर्म होइथांदा further ए जो CI3 पार्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 and C2H5COONA. So we will get here that sodium propanoate as a product. Is it clear? बुझी पारला समझते? Yes sir. तापरटा कौन होगा प्रोडक्ट 2 नंबर टा नवीन को 2 नंबर कौन आसीबो प्रोडक्ट आयोडो फॉर्म तो आसीबो ही आसीबो ता सहित जो सोडियम सॉल्ट आसीबो तार ना कौन हो सोडियम ब्यूटेनोएट वेरी गुड आ गोटे मु भूल जाइछि याकू बैलेंस करबा को 6 and 3I2 plus 3HI फॉर्म होबो एटी 3HI भी फॉर्म होबो अकॉर्डिंगली ठीक अछि एटी कोन आसीबो ताले CHI3 plus सोडियम ब्यूटेनेट बहुत बढ़िया कथा बहुत बढ़िया आंसर नवीन बहुत सुंदर CHI3 आयोडो फॉर्म plus सोडियम ब्यूटेनेट दैट इज C3H7COONA सोडियम ब्यूटेनोएट plus 3HI आयोडो फॉर्म सर एटा व्हाइट प्रेसिपिटेट लिख दीची प्लेन एटा येलो प्रेसिपिटेट हबो आयोडो फॉर्म हैज कलर येलो प्रेसिपिटेट वेरी गुड तापरडा सोडियम पेंटानोएट बहुत सुंदर आंसर नवीन the next step it will be CHI3 plus C4H9 COONA so this is your sodium pentanoate right this is the product name of the product is sodium pentanoate what about the fourth number is just little bit changing टिके चेंज कराई छि फोर्थ नंबर रे किंतु कोन आसीबो प्रोडक्ट जदि हम देखिबा C2H5OH को KMnO4 ऑक्सीडेशन कले हमें कोन पाइबा इट विल गिव राइज टू आयोडीन ए जो जिनसटा रहिछि एटा परे नबा हमें परे यूटिलाइज करबा आगो KMnO4 को यूटिलाइज कले हमें कोन पाइबा CH3CHO we will get acetaldehyde further on treatment with I2 and NaOH will produce CHI3 plus HCOONA sodium formate CHI3 plus HCOONA sodium formate is it clear बुझ पाला समझते
ବୁଝିପାରିଲ ନବୀନ? KMnO4 को इथानॉल को ऑक्सीडेशन कले आम एटा प्रोडक्ट पाइबा. सो दिस विल गिव राइज टू आयोडोफॉर्म एंड दिस इज सोडियम फॉर्मेट. धीरे धीरे पिला संख्या कमी कमी जाउछंती. आग 11-12 जन रहउथिले, तापर धीरे धीरे बे जण 2 जन रहउछंती. आज मात्र 3 जन रहछन इंक्लूडिंग मी. ठीक अछि. फर्दर याको हमें जदि हमें करबा CH3, दिस इज CH3 CH CH3 OH, CH3 CH CH3 OH. याको हमें जदि कपर प्रेजेंस रे डिहाइड्रोजिनेशन करबा कोन आसबे प्रोडक्ट? यस प्रणाम नीलिमा. कोन आसबे एठी फर्स्ट प्रोडक्ट जहा को हमें I2 और NaOH से ट्रीटमेंट करले आ गोटे प्रोडक्ट आसबे. नमस्ते त्रिषा. जाओ खुशी लगिला आ 2 जण आसिले. CH3 CH CH3 OH या को हमें कपर प्रेजेंस रे डिहाइड्रोजिनेशन कले कोन आसीबो प्रोडक्ट? तो ये प्रोडक्ट आसजिबो तुम्हारा CH3COCH3. The product will be CH3COCH3 with removal of H2. So acetone आसजिबो. एसीटोन को जेतबेला हमें आयोडीन और NaOH सहित ट्रीटमेंट करबा हमर कोन आसजिबो प्रोडक्ट? What will be the product if we treat with I2 and NaOH to acetone? गुड नवीन. एसीटोन आसीजिबो. ठीक कथा. ताको जेतबेला हमें आयोडीन और NaOH सहित ट्रीटमेंट करबा कोन आसीबो प्रोडक्ट? मु रेकमेंड करबी जो माने भी आगरो वीडियो जमा बिल्कुल भी देखि नाथि समाने आगो वीडियो देखि नियंतु, तापर ए क्लास अटेंड करंतु, देखंतु भल लागिबो. एसीटोन को हम जेतबेले आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेबा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? एसीटोन अपन आयोडोफॉर्म रिएक्शन विल प्रोड्यूस व्हिच? देखिनी. ठीक अछि नीलिमा, तुमे प्रीवियस क्लास वीडियो देखिनियो. बर्तन क्लास करबा दरकार नै. प्रथमे प्रीवियस वीडियो देखिनियो, कारण एगुडा के सब प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टॉपिक किंबा किछ समय अपेक्षा करनियो. नेक्स्ट टॉपिक आसिले तुमको असुविधा हबनी. So iodoform and this will be your sodium ethanoate. ताले इठी iodoform और sodium ethanoate same to same product आसिला. Then the intermediate product will be CH3COCH3, that is acetone. Acetone आसिबो इठी product. ठीक अछि त्रिषा, तुमे पूरा प्रीवियस वीडियो गुडा को देखि नब. तो से जाय टिके अपेक्षा कर, मु जो पर्यंत तुमरो या आरंभ न होइछि प्रीवियस वीडियो. CH3COO OCA plus CaOO COCH3. This will produce your acetone as a product.
ओके नेक्स्ट हमर एठी जदि हम देखिबा CH3COCl रोजेनमॉन्ड रिडक्शन रिएक्शन रोजेनमॉन्ड रिडक्शन रिएक्शन रे हमर प्रोडक्ट कोन आसीबो रोजेनमॉन्ड रिडक्शन रिएक्शन रे द प्रोडक्ट विल बी CH3CHO aqueous NOH रहिछि